हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज रंजित निगम। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि सॉइल बनता कैसे है। हियर आई विल टीच यू हाउ टू सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस। ओके, जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले वहाँ के सॉइल को चेक करते हैं। सॉइल चेक करने से पता चल जाता है कि आपकी बिल्डिंग सेफ रहने वाली है कि नहीं रहने वाली, या फिर आप जो भी बिल्डिंग को लोड देते हैं वो लोड सॉइल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो सॉइल ट्रांसफ़र होता है तो आपकी बिल्डिंग सेफ रहने वाली है नहीं रहने वाली है, मतलब सॉइल आपकी बिल्डिंग के लोड को बियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दैट्स इट। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू चेक द सॉइल बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन ऑन द सॉइल्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, आप लोग भी जब भी बिल्डिंग बनाना कंस्ट्रक्शन करना सॉइल चेक कर लेना, नहीं तो कुछ समय बाद ये होगा कि बिल्डिंग गिरेगी और आपकी बिल्डिंग नीचे और आप बिल्डिंग के नीचे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, here is rocks in India, many regions having rocks. Okay, on the upper surface of the rocks there is a particles. Okay, and within the particles weathering phenomena taking place. Weathering phenomena taking place is like a physical agent, chemical agent. In physical agents as a air, wind, running water, gravity, etc. And in chemical agents as like a carbonation, oxidation, reduction. And okay, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए रनिंग वाटर है, यहाँ की पार्टिकल्स को फ्लो करके यहाँ ले जाएगा, यहाँ पे फ्लो होता जाएगा, डिपोजिशन होता जाएगा, तो यहाँ पार्टिकल्स यहाँ डिपोजिट होते होते अपफ्यूअल बनेगा, यहाँ पे भी सॉइल फॉर्मेशन होगा। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा है। अदरवाइज यू कैन से दैट here particles due to the weathering phenomena, physical or chemical agents, particles going through due to the transportation and deposition of the soils and formation of upheaval, and again formation of due to the after long times, decades, years, there is a small rocks and again rocks, and again on the rocks there is a weathering phenomena taking place. Okay, technically you can understood that यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी एट सम ड्यू टू सम हाइट लॉस करेगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लॉस करने के बाद इट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इट गोज फर्दर नेक्स्ट। ओके, दैट पार्टिकल्स डू नॉट गोइंग टू फर्दर नेक्स्ट एंड डिपोजिट ऑन द सेम पेरेंट रॉक्स। जो पार्टिकल्स यहीं पे डिपोजिट हो जाएगा वो रेसिडुअल सॉइल होगा। दैट पार्टिकल्स डिपोजिट ऑन द सेम पेरेंट रॉक्स आर रिटेन ऑन द सेम पेरेंट रॉक, this is called residual soil. Okay, so here we understood that weathering rock is a basalt or igneous. Okay, weathering, residual soil, transported soil, the particles transported and deposition on the other region. Okay, weathering, residual, transportation, upheaval, and again weathering formation take place. This is cyclic phenomena. Okay, starting from weathering and ending from weathering also. So this is cyclic phenomena, and whole this process is called a geological cycle. Okay, so you should remember the geological cycle. There is the following terms. Okay, now move next to the as tests. जैसा कि हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, suppose that your soil is not good for construction, then how to make good for construction? You will do as a consolidation, compaction, stabilizations, and also check their soil properties is like as water content, dry density, plastic limit, consolidation, density index, liquid limit, etc. Okay, and soil properties index is like as void ratio, porosity, saturation, gamma density, bulk density, air content. Okay, many more. Here is a few relationship of index properties I will discuss to the next lecture. Okay, AC equal to WG, gamma B equal to G plus SC, gamma D 1 plus E. Here is the main formula of gamma B equal to G plus SC, gamma W upon 1 plus E. If you put S equal to 1, it becomes a saturation density, and if you put S equal to 0, it becomes dry density. Okay, and settlement we will study in the consolidation chapter. A settlement is the H naught Cc upon 1 plus E naught log sigma final upon sigma initials, and okay, and we will want to teach about the Carl Tarjagi. Okay, Carl Tarjagi is the father of the soil mechanics.
and this is not a civil engineer, this is a basically mechanical engineer. Okay, and his first book launched in 1925 and book name is Art of Biomechanics. Okay, so आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रहिए. थैंक यू.